welcome back to my channel or welcome to the channel if this is the first time you are watching me. And in today's video I am completely dolled up, as you can see, because in today's video I am going to do an amazing Nykaa haul. After so long I have purchased lots of items from Nykaa and I'm super excited to show you guys what all I have purchased. And now without wasting even a second, let's get started with this video. Let's quickly start with the first product. So the first product that I got on my hands is, start with this one. This is an amazing beauty blender. I don't know the name of the brand. I know the name of the brand, but I have never heard of it. It's from HP Bronson Professional. The links to all this will be given in the description and you will see all the prices on the screen. And this is how it looks. It is very soft. I love how soft it is. I was a little skeptical about this because I was thinking itna soft, kya pata soft hoga nahi hoga, but I am super happy with this purchase. Moving on to the next product. Next I bought this eyeliner from Nykaa. This one is from Nykaa's Get Winged collection and this is how the eyeliner looks. And this is the, you can see, so it is like a little, you know, ऐसे एक कर्व सा बना हुआ है, एक आर्क सा बना हुआ है, so that एक बार में आपको विंग लुक आए. नाउ आई हैड एन आईलाइनर बट एक्चुअली मेरे दोनों आईलिड्स कभी मैच नहीं होते, दोनों लाइनर कभी मैच नहीं होते, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट गेट माय हैंड्स ऑन दिस वन. So this is the one that I bought. The next product I bought is this eyebrow pencil from Swiss Beauty. ये इतना ज़्यादा inexpensive था and so I really wanted to use this, try this one out because इसका एक bristle type का भी है जो काफ़ी use करेगा, काम आएगा. It's gonna come very handy. And then this is how it looks. I got it in the deep brown shade because I really like brown eyebrow pencil rather than black one. So this is the one I got. This was only for 65 rupees. Can you imagine? So अगर guys आपको इसका reviews चाहिए तो you guys can comment down below. I will definitely try a makeup look using these products and I will give you a review on that. And now I bought two of this because बहुत सस्ता था and I run out of eyebrow pencils very quickly. Now guys, the next product is this Miss Claire का lip liner. This is in a brown shade. इसके पहले I have a lip liner from Nykaa जो nude shade में, and I really wanted one in brown shade. Now I do not use lots of lip liners, so I got this one, the cheaper one, the inexpensive one, to try it out. And yeah, that's that. Next thing that I got is my concealer. I run out of concealers pretty quickly. Now मैंने ना क्या करा है, मैंने मीडियम बेज, शेड नंबर मीडियम बेज मंगा लिया है LA Pro कंसील का. एक्चुअली आई एम इन द शेड प्योर बेज बट आई रियली वांटेड टू ट्राई अ डीपर वर्जन टू चेक इट आउट कि वो कैसा है मेरी स्किन पे. आई थिंक इट विल सूट बेटर ऑन मी. सो दिस वन इज LA Pro कंसील का, LA Pro Girl का concealer, which is a highly recommended, amazing product. Then moving on, I got this sunscreen because this Neutrogena one has like SPF 50 plus, so I really wanted this. So I ran out of my other tube, so I repurchased it क्योंकि काफ़ी handy है sunscreen and जून का महीना है तो you will definitely need sunscreen. I'm gonna talk about lipsticks at the end of this video क्योंकि काफ़ी सारा lipsticks है मेरे पास. Now moving on, I got this MAC Caffeine का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब. दिस इज़ अ बॉडी स्क्रब एंड इसका रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे नायका पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्राई कर लेते हैं. सो दिस इज़ द डब्बा एंड it also comes with a wooden spoolie. So I think yeah, so this is that. I'm gonna use it and इसका रिव्यू मैं definitely आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि इसके recommendations बहुत सारे थे. So I definitely wanted to try this one. टैन रिमूवल बॉडी मास्क है तो मैं बताऊँगी कि एक्चुअली में कितना टैन रिमूव होता है या होता भी है या नहीं. So that's that. I bought this pouch from Nykaa. Oh my god, it's matching my outfit. I bought this pouch from Nykaa. मेरे को लगा ये थोड़ा बड़ा होगा साइड्स में, so it's kind of a little disappointment. Nevertheless, I can carry lipsticks and my medicines in this one. So yeah, it's okay for 200 rupees. Cute है, but I thought it's gonna be in a bigger size, so I purchased this one. Now guys, let's talk lipsticks. So the first one that I have over here is the Maybelline Super Stay. This one
दिस वन इज़ द मेबलिन सुपर स्टे एंड ये जो शेड है ये बहुत ज़्यादा हाइप है इंस्टाग्राम पे. द शेड इज़ सिडक्ट्रेस. आई love the shade. I really wanted to try this shade guys. अगर आपको एक perfect nude shade चाहिए तो you will have to try this one. Look at the shade guys. It's seductress yeah. So ये shade बहुत you know it's a perfect shade for Indian skin tones and काफ़ी earthy shade है. Pink का भी tint है तो a perfect nude yeah. गाइज मूविंग ऑन. मेबलिन का मैंने एक और शेड लिया है, एक और लिपस्टिक लिया है दूसरे रेंज से. दिस वन इज नॉर्मल मेबलिन न्यूयॉर्क. द शेड नंबर इज 640. द शेड नंबर इज 640 एंड इसका कलर है रेड लिबरेशन. द नेम ऑफ द शेड इज रेड लिबरेशन. इट्स अ ब्यूटिफुल रेड लिपस्टिक एज यू कैन सी. ब्यूटिफुल रेड शेड एंड मैं थोड़ा स्वॉच भी कर ही देती हूँ. दिस इज द शेड एंड yeah it's a basic normal red lipstick. On to the last pair of lipsticks that I purchased is this one. It's the Smashbox combo always on to mini matte duo and it has got the shades driver seat and disorderly. Now driver seat is a nude shade and disorderly is a more of a maroonish reddish shade. So let's try them out as well. Smashbox का लिपस्टिक तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं जस्ट लाइक हुडा ब्यूटी. बट ये जो मिनीज होते हैं कॉम्बोज काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं एंड आई रियली लाइक इट एंड आई लव देम. सो या 2100 का एक पड़ जाता है तो आई गॉट बोथ ऑफ देम फॉर 1090 ओनली. सो दिस वन इज ड्राइवर शेड. दिस इज द शेड. नाउ लेट्स ओपन. इट्स अ ब्यूटिफुल न्यूड पिंकिश न्यूड शेड. आई थिंक इट्स नॉट पिंकिश, इट्स न्यूडिश न्यूड शेड या ब्राउनिश ही है. ओ माई गॉड इट्स सो ब्यूटिफुल. स्वॉच करके वेस्ट करने का भी मन नहीं करता है. सो दिस इज द शेड गाइज. This is the shade. It's a beautiful shade. This one as you can see is more of a maroonish shade. Agar if you can carry it well, definitely it's gonna rock your makeup look. Like with a very subtle makeup you can go for this shade. It's very maroon and very powerful shade. So this is the shade. I love it. So I bought these 4 lipsticks and now moving on to the last product that I purchased in this haul is this Maybelline Fit Me ka powder. It's a basic loose powder from Fit Me and I'm in the shade 25 medium or Moen. So that's my shade. I ran out of this bottle as well, so I got my hands on this one. तो मैंने ये रीपर्चेज कर लिया. सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर माई नायका हॉल. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू डिड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज ऑन द स्क्रीन. एंड नाउ गाइज आई एम गोइंग टू say bye to you guys. I hope you all enjoyed. Give it a big fat thumbs up if you like it and please comment down below कि आपको review चाहिए या नहीं and what different kind of videos you want me to make for you all. And yeah, bye. And also बताना कि आज का मेरा makeup look कैसा है. Bye guys.